और ऐतिहासिक समझौता संपन्न होते हुए देखा है। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। मैं हिज एक्सलेंसी राष्ट्रपति बाइडेन, हिज रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस एंड प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान, हिज रॉयल हाइनेस राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद, हिज एक्सलेंसी राष्ट्रपति मैक्रो, हिज एक्सलेंसी चांसलर सोल्च, हर एक्सलेंसी प्रधानमंत्री मेलोनी और हर एक्सलेंसी प्रेसिडेंट वॉन डेर लेयन, इन सबको इस इनिशिएटिव के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, मजबूत कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर मानव सभ्यता के विकास का मूल आधार है। भारत ने अपनी विकास यात्रा में इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सोशल, डिजिटल तथा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व पैमाने पर निवेश हो रहा है। इससे हम एक विकसित भारत की मजबूत नींव रख रहे हैं। हमने ग्लोबल साउथ के अनेक देशों में एक विश्वसनीय पार्टनर के रूप में एनर्जी, रेलवे, वाटर, टेक्नोलॉजी पार्क्स जैसे क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए हैं। इन प्रयासों में हमने डिमांड ड्रिवन और ट्रांसपेरेंट अप्रोच पर विशेष रूप से बल दिया है। पीजीआईआई के माध्यम से हम ग्लोबल साउथ के देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। फ्रेंड्स, भारत कनेक्टिविटी को क्षेत्रीय सीमाओं में नहीं मापता। सभी क्षेत्रों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाना भारत की मुख्य प्राथमिकता है। हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी विभिन्न देशों के बीच आपसी व्यापार ही नहीं, आपसी विश्वास भी बढ़ाने का स्रोत है। कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स को प्रमोट करते हुए कुछ मूलभूत सिद्धांतों का सुनिश्चित किया जाना महत्वपूर्ण है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय नॉर्म्स, रूल्स तथा लॉज का पालन, सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, डेट बर्डन की जगह फाइनेंशियल वायबिलिटी को बढ़ावा देना और पर्यावरण के सभी मापदंडों का पालन करना। आज जब हम कनेक्टिविटी का इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं, तब हम आने वाली पीढ़ियों के सपनों के विस्तार के बीज बो रहे हैं। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी लीडर्स को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। Thank you, sir. India and the United States of America co-chair this initiative, and now, as the co-chair, I invite the President of the United States for his remarks. Well, ladies and gentlemen, thank you, all my colleagues. This is, someone once said in a similar domestic action that was positive, this is a big deal. This is a real big deal. And I want to thank you, Mr. Prime Minister. One Earth, one family, one future. That's the focus of this G20 summit.
And in many ways, it's also the focus of this partnership that we're talking about today. Building sustainable, resilient infrastructure, making quality infrastructure investments, and creating a better future. A future that presents greater opportunity, dignity, and prosperity for everyone. Last year, we came together as one to commit to this vision. And this afternoon, I want to highlight the key ways in which the United States and our partners are working to make this a reality. Economic corridors. You're going to hear that phrase more than once, I expect, over the next decade. Economic corridors. As we work to address infrastructure gaps across low and middle income countries, we need to maximize the impact of our investments. That's why a few months ago I announced that the United States will work with our partners to invest in economic corridors. In practice, it means we're focusing on regional infrastructure projects that deliver results across multiple countries and in multiple sectors. And today I'm proud to announce that we've finalized the historic agreement for a new India, Middle East, Europe economic corridor. As a key part of this corridor, we're going to invest in ships and rail that extends from India all the way to Europe, connected by the UAE, Saudi Arabia, Jordan, and Israel. Bridging ports across 2 continents, unlocking endless opportunities, including making it far easier to trade, export clean energy, expand access to reliable, clean electricity, lay cables that will connect communities and secure a stable internet, contributing to a more stable, more prosperous, and integrated Middle East. And I want to thank the sponsors. And I particularly want to thank Prime Minister Modi and the Crown Prince of Saudi Arabia, Mohammed bin Salman, and President von der Leyen and the European Commission. And since he's not speaking today, I wanted to, well, maybe he is speaking today. I had a note he wasn't speaking. At any rate, I'm going to stop there. In the sub-Saharan Africa, we're working in a private-public partnership as well to invest in a trans-African corridor. That includes a new partner, the European Union. President von der Leyen, thank you for making this very possible. Together, as part of this corridor, we're going to invest in a new rail line that will extend from the western port in Angola to the DRC, to Zambia, and ultimately the Indian Ocean. It's a project that's about far from just laying tracks. It's about creating jobs, increasing trade, strengthening supply chains, boosting connectivity, laying foundations that will strengthen commerce and food security for people across multiple countries. This is a game-changing regional investment, and both of these are huge steps forward. But they're far from the only ones. We're continuing to make big investments in infrastructure around the world. That includes a solar energy site, an insulin manufacturing facility, and electricity project right here in India. We're continuing to develop economic corridors across Africa, Asia, and the Americas. And together with our partners, we're working to mobilize the trillions of investment needed to close infrastructure gaps around the world, including the formation of a new investor forum that the United States will host in a couple weeks. Let me close with this. The world stands at an inflection point in history, a point where decisions we make today are going to affect the course of our future, all of our futures for decades to come. A point where our investments are more critical than ever. So together, let's continue to work as one to seize this moment in history and maximize our collective investments, to find new partners, to unlock new capital, because when we invest in low and middle income countries, all countries benefit.